So hello guys, welcome all of you here to this lecture. So today we're going to talk about introduction about oops. हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया था जावा क्या होता है, जावा लैंग्वेज हमको क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जावा, why should you consider Java language, right? And how to initialization all the all visual about Visual Studio Code, about some extensions that we use in Java, right? Okay, so let's start the video. So object oriented paradigm. I'm starting now. Object oriented programming is an approach that provides a way to modernizing programs by creating patterned memory area for both data and functions that can be used as templates for creating copies and search as models, right? Concept is based on data rather than the procedure. Then features of object oriented Java. These are some features are used in object oriented Java. What is basic concept? It is necessary to understand some of the concept as extensively on the codes, such as explained below: object and classes, data abstractions and abstractions, and inheritance, polymerism, and dynamic binding, right? Then starting with object and class. Objects are the basic runtime ethics, and then the object-oriented system. They are may be represent in the person, place, tables, and the data, etc. That programs may handle object contents, data, and the code is manipulated that data to entire set data and code, right? ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैनिपुलेट करता है क्लासेस को, राइट? इस चीज़ में मतलब ये सारी चीज़ें जो थ्योरी के बेसिस पे लिख रहे हैं, इन सब का यही मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज मैनिपुलेटेड द क्लासेस एंड मैनिपुलेटेड द डाटा, राइट? वो मैनिपुलेट करता है डाटा को वन बाय वन उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए, राइट? A type of using concept classes. A classes may be throughout as in data type, object as a variable. These classes and type at Mango. Example: Mango is an object belong to the class as fruit, right? Mango एक ऑब्जेक्ट है, पर वो एक फ्रूट के मतलब बोलते हैं ना, फ्रूट फ्रूट बोले तो बहुत सारी चीज़ें है, बहुत सारे फ्रूट्स है, पर मैंगो एक फ्रूट के अंदर जाता है, पर मैंगो इटसेल्फ इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट? मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, पर वो फ्रूट के अंतर्गत आता है, जितने सारे फ्रूट है उनमें से ये एक है। जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत सारे फ्रूटों में से एक है। हम लोग जैसे कविताएं नहीं बोलेंगे, राइट? रचना शायद लिखते थे, ऐसे ऐसे लिखते थे ना, तो उसी में शायद बोलते थे इट इज़ वन ऑफ देम, राइट? सो दिस क्लास इज वन ऑफ देम, मैंगो इज वन ऑफ द क्लासेस, राइट? ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द क्लासेस. Okay, data abstraction and abstraction. So data is a method. Mapping of data is a method into the single unit is known as interpolation, with the most striking and methods of the classes. These methods provides the interfaces between the objects and data, right? And the program is installation of data from direct access to the program is called as data hiding, right? What is data hiding? That is the question. What is data hiding? Those methods provide us interfaces between the object and the program. This installation of data from direct access by the program is called as data hiding, right? Then abstractions is referred to the act of representing essential features without including the background details. Classes used concepts as abstraction, right? Inheritance. What is inheritance, right? The process by which object of one classes and acquire properties object of another. Inheritance support three things, right? Code, readability, data,
redundancy, then hierarchical classification, right? ये तीन भागों में divided है, right? And this is about polymerism. Polymerism means an ability to take more one places an important role, allows object having different initial structures and share some essential inference, right? In the dynamic binding, binding is referred to the link of the process is called as code execution. Dynamic means the runtime is associated with the polymers and inheritance. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इन चीज़ों को क्यों पढ़ रहा था, राइट? ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूर है, राइट? जानना ज़रूरी भी है, जाननी ज़रूर है, जानना ज़रूरी है, पर ये चीज़ों का उपयोग हमको आगे प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में नहीं होगा, राइट? ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को पढ़ लेना, पढ़ के समझ लेना, शायद हो कुछ चीज़ों को रट लेना है, सबको मत रटना, जैसे ऑब्जेक्ट क्लास, ये चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अगर यही नहीं समझेंगे तो आगे तक में शायद कुछ कुछ प्रॉब्लम होंगे, और वो चीज़ों को मैं बार बार अभी यहाँ पे पढ़ के ऐसे बता दिया ना, आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, तो ये इसी से रिलेटेड चीज़ें आगे आते जाएंगी, और वहाँ पे ही मैं आपको सारी चीज़ें डिफाइन कर दूंगा, जिससे आपको आसानी हो चीज़ों में, राइट? तो हियर वी आर कमिंग introduction to Java. Java is a general purpose object-oriented programming language. Is developed by Sun Microsystem of USA in 1991, originally called as OOPS. OK लिखा है OOPS, right? Oops, Object-Oriented Programming Language, OPL, by the James Gosling, one of the inventors. Java inventors modeled their new language as Java based on C and C++, but remove the number of features of C and C++, so there is a problematic. Java डेवलप हुआ है C और C++ के थ्रू, राइट? C और C++ के बाद उसको डेवलप करके जावा को इन्वेंट किया गया है, पर इसमें इसका फीचर्स C और C++ से बहुत अलग है। जब ये प्रॉब्लमेटिक के ऊपर जा रहे होंगे, अगर किसी ने कोई सी वाला कोई सी खत्म करके जावा पे आया है ना, तो उसको पता चल जाएगा कि सी में कुछ चीज़ें सिमिलर है, बस लॉजिक, राइट? लॉजिक सिमिलर है, सारी चीज़ें सिमिलर नहीं है। लॉजिक सिमिलर होती है, हर एक लैंग्वेज में लॉजिक आसपास सिमिलर होती है स्टार्टिंग में। तो वही है कि कुछ चीज़ें सिमिलर लगेंगी पर सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, होगा जब हम जाएंगे कहीं पे, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड की और कहीं पे भी कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट दिखेगा, राइट? And features of Java. Java is a many string of features of explain below. यहाँ पे explain किया गया है. Then casually programming language either compiled and interpreted, but Java combines both of these made of Java. It's a two-stage of process, right? Java compiler translates a source of code, highly imposed code known as bytecode. Bytecode बोलते हैं ना, so byte codes are not machinery codes. In this second stage, Java interprets a generate machine code as executed directly and produce the output. We can thus say that Java is a both compiled and interpreted language, right? Java एक compiled and interpreted both चीज़ों को conduct करता है, तो इसको बोलते हैं compiled and interpreted, दोनों language में जाता है. Then platform is an independent and portable. Java programs are platform are independent, which means we can run the Java program on the every computer, no matters, right? No matters what the OS process or which the internal architecture. Java programs can be easily moved from one computer system to another computer system. Easily, it was means it was convert that is not convert, that is transfer easily one computer to another computer, as I say. Then made of Java portable. This is because of two things. Java generate bytecode which is machine independent, so it can be implemented on any machine. अभी ऊपर बोला ना बाइट कोड इज अ मशीनरी इंडिपेंडेंट, राइट? तो वहाँ पे हम लोग इसी की, मतलब इसी चीज़ के लिए हम जावा को किधर भी कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन सेकेंडरीली द साइज ऑफ द प्रिमिटिव डाटा टाइप इज मशीन इंडिपेंडेंट. दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट, ये किसी भी मशीन में जाके किसी भी मशीन में जाके काम कर सकता है. तो दिस इज इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी मशीन.
जैसे कुछ लैंग्वेज कुछ मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह जाए, पर जावा नहीं है ऐसा। जावा में यही चीज़ें डिफरेंट है। क्लियर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? जावा इज एन ट्रू एंड प्योर ओपीपीएल। अभी बोला ना ओपीपीएल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपीपीएल? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने कुछ देर पहले अभी बोला। then almost everything is in Java is an object. All the programs of code and data and reside within a class. Java comes with an executive set of classes arranged with a package that we can use in our program by inheritance, right? Then abstract. ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें इतने ज़्यादा मतलब ये भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, पढ़ लेते एक एक बार पढ़ लेते, प्रॉपरली पढ़ लेते, जिससे ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट? Java is an abstract language. It provides a many safeguards and ensure relatable code. It is strict compile time and runtime checking for the data type. It is designed as a garbage collected language and also incorporates the concept of the exception handling, right, in the source. uh, Security becomes an important issue for the language that used for the programming language on interest of Java system is not as verify all the memory that access also ensure the virus and communicated the flats and absence of pointers on Java ensure that the programming cannot be gain access in the memory location without any proper authorization, right? Okay, then see, मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ों को पढ़ लेना, राइट, रट लेना, एक दो बार पढ़ लेना, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये चीज़ें इतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है, पर इतना ज़्यादा इसके अंदर डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं वी गोइंग टू मतलब रीडिंग के थ्रू जा रहे हैं। The distributed Java is designed as the distributed language for the creating applications and the networks. It is ability to sharing multiple programs at the multiple remote locations to collaborate and work together at the projects, right? तो जावा का यूज प्रिफरली किस चीज़ में होता है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एज वी से क्या है, डिजाइन डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज फॉर द क्रिएटिंग एप्लीकेशन को क्रिएट करने में एंड नेटवर्क्स को राइट बिल्डअप करने में होता है यूज। देन सिंपल स्मॉल एंड familiar. Java is a small and simple. It is familiar because the module on C and C++, it doesn't use the pointers and processor directive codes to the statement so on. Why it is used, right? They're written here. Multidimensional inheritance. Sorry, iterative. Sorry, भूले, गलती हो गया. Okay, multi-thread means the handling multiple tasks and simultaneously using the Java. We need to wait for the applications and finish the task at one time. These features have generally improved the interactive performance to graphical applications. Then the dynamic. Java is a dynamic language which is capable to dynamically link in with the classes and libraries of the methods or objects. Then the Java programs are support to the function written in the other languages such as C and C++, where the functions are known as narrative methods, which is linked with the dynamically means the runtime. Then how Java differentiate from C and C++. See, यहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ों का नोट बना दिया गया है, ये चीज़ों को आप प्रॉपरली पढ़ लीजिए, राइट? ये चीज़ों को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यों डिफरेंशिएट होता है जावा सी और सी प्लस प्लस से, ये चीज़ों को ज़्यादा इसके अंदर डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एज आई कैन से मैं सीधा धीरे धीरे से बता देता हूँ। जावा डजंट सपोर्ट जावा एंड सी Unix statement are like size and the type of struct and union type of modifier. यहाँ पे ये चीज़ें लिखा है, what is how differentiate, ये चीज़ों को कैसे डिफरेंशिएट होता है। जावा में कौन सी चीज़ें सपोर्ट नहीं करते, जावा आर्ट्स, देन जावा एंड सी प्लस प्लस में जावा डजंट सपोर्ट, सेम थिंग यहाँ पे वही चीज़ों को लिखा गया है। तो ये चीज़ों को आई डोंट थिंक ये चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है और कुछ भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ये चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट? ओवरव्यू ऑफ जावा. Java is a general purpose of object-oriented programming language. Using the Java, we can develop two types of Java programs such as standard alone applications and web applications, right?
So these two type of applications are developed by using Java language, right? Then the standalone applications are programmed written with the Java, the carrying out of certain tasks on the standalone computers. Executing the standalone Java programs as involving two steps: compiling a source code into a bytecode using the Java compiler, executing the bytecode programming using the Java interpreter, right? Assets. ये जरूरी है नहीं, ये चीज़ तो इसमें जरूरी नहीं है। सो आज ऐसे अपने पहले ही वीडियो में मैंने यही सेम चीज़ आपको लिख के बता दिया था, पर अभी क्या होगा, क्या अभी ये होगा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पिछले वाले वीडियो में यही चीज़, एक मिनट अभी दिखा देते हैं, यही सेम चीज़ लिख के बताया था, अगर याद हो तो फिर एक और बात लिख लेते हैं, उसमें क्या है। एक मिनट बस, यहाँ पे गए, अरे ये कहाँ गए, फिर यहाँ पे ओपन फाइल के ऊपर गए, फिर कहाँ पे जाएंगे, पास्ट प्लेस है, राइट। यहाँ पे आई डोंट लाइक यू यहाँ पे लिखा है, इसको रन कर लेते हैं। हो रहा है रन, राइट, चेक हो रहा है। एक मिनट, देखिए आ गया, आई डोंट लाइक यू, राइट हियर। तो ये प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक करके, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ों को अच्छे से समझना, राइट। देन classes of declaration starts with the operating because of here braces, the ending with the closing braces, right, open with the opening braces, the closing braces। ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी ना, तो प्रोग्राम में एरर आ रहा है या नहीं। प्रोग्राम में ज़्यादातर एरर किस चीज़ में आता है, हम लोग शायद ये ब्रेसेस को छोड़ देते हैं या फिर साइड कॉलम को, इसको छोड़ देते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये कभी कभी गलती से छूट जाता है, तो इसी में एरर आता है ज़्यादातर। द मेन लाइन, द पब्लिक स्टैटिक void main, the string args defined as a method as main. Every Java program must have include main. A Java program can have number of classes, but only one of them is must include the main. The main line is contains of number of keywords such as public static void, public static void यहाँ पे लिखा है ना, देखिए public static void, then the main, right? Okay, here public, what is public? Just like C++, public is access to specifier that declare the main as accessors the classes, right? वो main को declare करता है, right? Then static is the key static was the declare of main as the belongs to the entire classes and not the part of any object. Then the main must have the declare part of static since the interpreter is used as the main before with the object is created. Then void, the type of modifier void starts with the main, doesn't return to any value but simplify the points to next to the screen. After that, string args, all the parameters are the methods are declared inside the pair of parameters, sorry, parentheses, sorry, all the parameters are the method declared inside the pair of parentheses, right? ये है parentheses, ये वाला चीज तो यहाँ पे डिक्लेयर तो किया हुआ है, एक मिनट ऊपर देखिए, स्ट्रिंग ऑर्ग्स, राइट, यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर तो किया हुआ है, पैरेंथेसिस है इसके अंदर। देन here the string args and parenthesis also declares the parameters are named as args, which is contents of array and objects with classes of types of strings, right? ये strings content करता है इसके अंदर। So the output line is system.out.println. If only execute statement in that program is the very similar to printf, as I can say C में use होता था, right? C अगर किसी ने पढ़ा हो इससे पहले, तो C में printf, scanf या ऐसी चीजें यूज होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, system.out.println, printf नहीं println, right? println. So what is the difference between it? Every method is the part of object. Println is the member of out object.
which is static data as a member of system classes. Println append for the new line character, it is ends to the strings at the strings. Every Java program is must with the semicolon. यहाँ पे एक और चीज़, राइट, सेमीकोलन यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर सेमीकोलन के अंदर लिखेंगे वरना एरर आएगा। सिंपल आप सिंगल सेमीकोलन के अंदर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पर डबल सेमीकोलन के अंदर चीज़ें ज़्यादा ईजी होती है। और प्रिंट एलन, यहाँ पे एलन इसलिए यूज़ होता है कि इट वॉज गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। अगर यहाँ हम यहाँ पे सी पे आए तो सी में क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए हमको बैकस्लैश एन को टाइप करना पड़ता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे टाइप होता है ना प्रिंट एलन, राइट। In the order of type Java program, we should type to edit such as Notepad while saving the codes having the follow which are the class from which the main is should be primary and extensions name should Java in the Java extension is not okay. Then comma comments. If we are talking about Java में सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, डॉक्यूमेंट कमेंट, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। सी में भी यूज़ होती है, राइट। Then Java is format both of the single multi-line comments are the Java. There are three type of comments are here, like single line, multi-line, documentation. यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ें प्रोग्राम के पहले लिखा होता है, राइट। प्रोग्राम के पहले ये चीज़ें लिखा होता है आपके लिए। ये वाला प्रोग्राम लिखेगा क्योंकि बहुत बहुत देर से बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे आपको समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए समझना भी। तो बस कुछ चीज़ों का मतलब ध्यान रखना है। फर्स्ट क्लास आज जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में है। फिर यहाँ पे एक और चीज़, छोटी सी चीज़ यहाँ पे बस करना है, इंटर लगाना है, इंट नाम, इंट नाम इक्वल्स टू, राइट, 169। हम लोग और कुछ लेते हैं, 12 लेते हैं, राइट। देन हर बार की तरह ये ज़रूरी है बेटा, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट नाम, देन class this is, then the next one system will have, then the the number is, इसको पूरी तरीके से निकाल देंगे, the is, then next क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा, ये क्या प्लस नम, राइट, हो गया खत्म, प्लस नम, ये चीज़ खत्म हो गया, खत्म खत्म खत्म, ओके शायद what is the number is 12, see here is that, अगर ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा, देखिए एंड नम, यहाँ पे एंड नम लिखना पड़ेगा वरना स्टेसिंग टैक्स एरर आएगा, देखिए एंड लिख लीजिए, एंड नम में एरर आएगा, the number is here is 12. So these are the basic things, right? Next, moving back to the next topic, Java program structures, document of the selections, suggestions and the package statements, import। ये Java का structure है, देखिए एक मिनट पहले फिर से चलते हैं पहले चीज़ पे, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या था कंट्रोल, फिर राइट, तो ऐसा ही है यहाँ पे, देखिए पहले क्लास डिफाइन किया गया है, फिर पब्लिक, फिर एक इंटीजर पोस्ट और क्या, फिर आउटपुट। तो यहाँ पे वही चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है, वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है, तो वही चीज़ है, सेम चीज़ एंड टोकन इन जावा, राइट। The Java program is basically collections of some classes. The smallest individuals units in the programs is known as tokens. A Java is a collection of tokens. Comments as a white space program as 5 keywords, identifiers, then literals and operators and separators. Java set. Then starting with keywords.
keywords are nothing but the reversed words with the predefined. Java supports us 50 words, and apart from 50 words, Java returns 3 words such as true, false, and null for the identifiers. The values. The keywords was written as the lower cases and letters. We can't use them as a variable. The Java, the case of sensitive, so we should avoid using any keywords as the variable by changing cases because it is bad practice. The abstract keywords and the abstract identifiers, literals, and then the operators. इस सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, राइट? आइडिया व्हाट इज आइडेंटिफायर्स, आप लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए। जैसे मैंने इसको बता दिया, यहाँ पे मैंने ना नोट्स में चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली जाके एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ें पढ़ने की बात है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। बस अगर मैं ऐसे ही रट्टा मार के चला जाऊँ तो वही है कि वही चीज़ है, वही है। आगे ऑपरेटर के बारे में बात तो करेंगे ही ऑब्वियसली, आइडेंटिफायर्स के ऊपर, लिटर्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर आगे बात करते जाएंगे। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, व्हाट इज कैरेक्टर, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज नॉन वेरिएबल, तो व्हाट इज ऑपरेटर, इस चीज़ के ऊपर तो ज़्यादा बात होगी भाई। इसके ऊपर तो एक टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटर। यहाँ पे 6 या फिर 7 तरह के वो ऑपरेटर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे, राइट? तो सेपरेटर। सो या यहीं पे हमारा मतलब ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी शुड टॉक अबाउट द कांस्टेंट वेरिएबल्स, राइट? सो आज के लिए इतना ही गाइस। तो इस वीडियो में हमने किस किस चीज़ों के ऊपर बात की? हमने बात की, पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज़ जावा और इंस्टॉलाइजेशन के ऊपर। इस वीडियो में हमने बात की ऊप्स के ऊपर और